So if you go to this definition, scientific communication is about communicating science and building bridges between the people involved in scientific research and the public. So from the definition itself, I'm sure आप लोग confused हुए होंगे. It is talking about communication between scientists and the public. पर जो हमारा impression है scientific communication का वो है कि कैसे हमें पेपर प्रेजेंट करना है, कैसे पेपर लिखना है, हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट, हाउ टू सबमिट एब्स्ट्रैक्ट, हाउ टू टेक लेक्चर्स. हमारी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिकेशन की हमेशा यही रही है. बट द डेफिनेशन सेज समथिंग एल्स. इट सेज दैट साइंटिफिक कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन साइंटिस्ट एंड द पब्लिक. सो इफ यू ऑल्सो थॉट लाइक मी, यू आर नॉट wrong, but you are partly right. And why you are partly right? Because we need to understand what is public. So in the field of science, actually everything has got a definition. So public is also something which requires definition. So what is public? In view of the scientific communication, public includes scientists. The scientists may be in industry, in academic community, or in the government. Then there are certain science communicators or mediators. These may be communicators, journalists, educators, opinion makers. Then there are decision makers who are policy makers in government and scientific institutions. And then there is a general public. So these three above groups plus the lay people who are interested in science are called general public. General public can be attentive public, the public, a part of general community which is already interested in science and scientific activities. And it can be interested public who is interested in science but is not involved in scientific activities. So these all groups are together called public. So, but actually science communication or scientific communication deals with it. It deals with all the questions that we have in our day-to-day life regarding things which are surrounding us. So if we have to take questions, this includes both personal questions as well as questions which deal with the society, communities, and countries at large. So there can be simple questions like which car to buy, whether we should buy a fuel-efficient car or an electric car. So why this question is important? This question is important because Indian government is phasing out all fuel cars except for electric cars. They are replacing it with electric cars in coming future. So the question is that there are enormous amount of population which is employed in fuel. So where this population will go if we all deal with electric cars only. And second, the electric cars are lithium ion based. And India is not having any source of lithium. There are only few areas in India where lithium is available. So it actually makes a nation dependent on raw material that has to be derived from other nations. So the other questions like, is it all right to eat genetically modified food? So is there a demand of genetically modified food? Whether we should bring a demand of it or not? The question is very important. Why? Why there is genetically modified food available? Because when we modify food genetically, it becomes more profitable because it enhances the crop. We get more food. But the next question is that is there any scarcity of food in the planet? The answer is no. Actually, there is excess of food. Even the Western nations actually dump their food annually, which is not utilized. But at the other place, like Africa and India, there are people who are dying of hunger. So there is mismatch. So whether we should eat genetically modified food or not, this is a very valid question. So similarly, there are many other questions like, is it safe to share photographs of kids on social media? Is nuclear power more efficient, but is it safe in view of natural calamities? Which camera lens is better, a zoom lens or a zoom plus wide angle lens? What should be the proportion of funding of a developing nation on military technology, health and education? So these are all scientific questions. Now the problem is why I have chosen, you might have noticed that I have selected few specific questions which doesn't deal with medical science. So we all are lay persons for these questions, but we need to answer. We need to know about all these things. So just go back to these questions and try to see whatever you know, what little bit or more you know about these questions. And if you know something about it, from where that information has come to you. Whether you got this information from television, newspapers, science magazines, some conferences, or what means
from where you have got these information, or you got no information. So what I presume it that majority of you won't be having much of the information regarding these questions. So you're all surrounded by cars, surrounded by food, social media we all are using, but still we have considerable knowledge gaps. And the reason for considerable knowledge gaps is we have lack of scientific communication. So that is what this today's class deals with. So I came across this very interesting phrase while I was searching for this topic. It was written somewhere that the survey suggests that public does not know much about science, and it appears that scientists don't know much about the public. So for both scientists as well as for the public, there are considerable knowledge gaps for both of them. The second part of the phrase was that the recent surveys also indicate continued high levels of interest in science, but continuing low levels of accessible understanding of science. So again, go back to those questions. They all interest us. They all belong to science, different sciences, and we don't have much understanding of those questions despite being very scientific people. So there are considerable knowledge gaps. And this survey was done in USA and UK. And they said that this knowledge gap occurs despite the government support science promotion and educational programs. So this is because these topics like scientific communication, the topics like these are actually neglected topics in our society, and we should deal with them. So what is the flow of scientific communication? So this is something which I designed because I'm sure that you might have been confused right from the very beginning that the scientific communication is communication between scientific peers. But this is not true, but I have made this slide just to address it. It can be communication between scientific people with their peers or other scientific people, or it can be communication between scientific people and lay public. So what are the tools that we use for scientific community? We use by writing scientific papers, making a scientific or technical presentation. We write research projects and research proposals. We search literature using different mediums, and we create web pages and read web pages. So this is how we disseminate information among our peers. But when we talk of spreading information to lay public, there are two important ways of transmission of information. One is a linear model or one-way transmission, which is also called dissemination paradigm. The other is the public participation paradigm, where there is a dialogue between experts, public, and policymakers. So most of the topic today will deal with the communication with the lay public. So if we have to take examples of dissemination paradigm or one-way or linear communication, the most important one is the education through formal school setting. So why we are not able to answer those questions which I initially asked? Because we dealt with the science that deals with those questions in our early days only. So we dealt with those parts of science till our 10th class. And why government has kept such a curriculum? Because government requires a society to be scientifically literate, at least to a certain extent. So up till the class 10th, 11th or 12th, everything has to be read by everyone. Social sciences, political sciences, the mechanics, physics, chemistry, everything. And what government do in addition to it, it timely revise that science curriculum. We all do that. For example, today's class, it belongs to a 01 course which did not figure prior to today's time. It is only thanks to Dr. Punita and Dr. Aditya that they devised this program. This is a new curriculum for all of you. We do deliberate and keep changing the curriculum. The other way the dissemination paradigm works is re-education through the mass media. So once you pass out from this place, you become the alumni of this place. So what we ask you is to keep educating yourself through popular science books, journals, documentaries, magazines, conferences, and many other ways. What in Extra we do, we hold alumni meetings here. We ask you to come back. We keep workshops on alumni days. We request you to attend those workshops. We also invite people who are doing well
after going from here to take lectures in those workshops and conferences also. So this is a process of education and re-education, and this belongs to a dissemination paradigm. What is a public participation paradigm? So these are very complex words. I also came across them for the first time in my life. These are public hearing and a referendum. Probably you'll understand about it. Then there are science shops, scenario workshops, citizen juries, planning cells, and deliberative polling. All these belongs to citizen sciences. So now I would like to ask you all, how many of you are aware of the hierarchy of positions in Indian police? You can unmute and tell me. How many of you? Did anyone knew about it? What is the hierarchy of Indian police? It starts with IG, Inspector General of Police, then Deputy Inspector General of Police, then Superintendent and Jailer. So I'm sure that many of us won't be knowing it. So why I have kept this? I took this photograph today morning only. So this is a photograph from a chapter of my daughter's book. She is in 6th class. And this is social science book, civics book. And I tried to recollect when did I last read it. And I'm not sure, at least in my social sciences books, it was not there. So this is the process of improving upon whatever is there in the books. So this is a form of revision of science curriculum. It keeps on happening all the time. So we'll go through some of the things which I have mentioned in the paradigm where there is a participation with the public. This is a science shop. Have you ever seen the core lab of our institute? What is a core lab? Anyone? What is core lab? देखिए core lab कहाँ पे है? वो फर्स्ट फ्लोर पे है. फर्स्ट फ्लोर पे है. सी ब्लॉक अच्छा. नियर पैथोलॉजी. हाँ. नहीं, आप पार्टली राइट हो. Core lab, the stored sample minus degree. Yes, very good. आपने वो मूवी देखी है? वो मैजिक वाली कौन सी मूवी थी जिसके 7 पार्ट्स हैं मूवी के? कौन सी मूवी है? हाँ, हैरी पॉटर. हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर में वो होता है ना प्लेटफॉर्म, उसका क्या नंबर था जिससे वो जाते थे मैजिक वर्ल्ड में? 3.5 था, 1.5. प्लेटफॉर्म नंबर वाज 3.5. 9 3/4. हाँ, तो हमारी कोर लैब भी जो है ना 1.5 फ्लोर पे है. कभी जाना उस पे, है ना? 1.5 floor. So the core lab का purpose है, it's a central facility where anyone who has got a project but who doesn't have a lab can go with the chemicals and their probes. There are machines there, there are consumables there. They can go and they can do their tests there. So without even having a lab, you can conduct a research project in this institute because of the presence of a central core lab. So this is a story in institute, but what happens in communities? In communities there are science shops. ये इंडिया में नहीं होती, बाहर के देशों में है. अब इंडिया में होगी, I am not sure. A science shop is a facility often attached to a specific department of a university or an NGO that provides independent participatory research support in response to concerns experienced by civil society. अब कहीं की सिविल सोसाइटी है, उनको कोई सवाल आया कि उनके एरिया में ये प्रॉब्लम है, दिस शुड बी सॉल्व्ड, एंड दे वांट टू हैव अ स्मॉल रिसर्च फॉर दैट. सो व्हाट दे डू इज दे गो टू अ लोकल एरिया यूनिवर्सिटी. सो द एक्सपर्ट इन द यूनिवर्सिटी, दे एक्चुअली रिफाइन देयर क्वेश्चन एंड देन दे एडवाइज देम हाउ टू गेट द आंसर. दे आस्क द सिविल सोसाइटीज टू पार्टिसिपेट एंड दे अलाउ देयर साइंस शॉप टू हेल्प देम. दिस इज द डिमांड ड्रिवन bottom-up approach, and this is also called community-based research.
जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, द रिजल्ट्स आर अगेन रिप्रेजेंटेड टू द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो एक्चुअली जो हम साइंस प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं इंस्टीट्यूट में, वो बहुत छोटी है। वो एक पेशेंट के लिए है, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स के लिए है, बट जो जिन डिसीजन मेकिंग से हम लोग अफेक्ट होते हैं वो सिविल सोसाइटीज में होते हैं, और वहां पे जो रिसर्च होती है दैट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च। The second is a scenario workshop. Scenario workshops involve a group of citizens interacting with other participants to exchange knowledge, experience, develop common vision, debate, provide criticism, and produce a plan of community actions and potential future development. I am sure इस बात से आपको कुछ समझ में तो नहीं आया होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज करें हम एक साल पीछे चले जाएं, लास्ट ईयर दिसंबर, जब कोविड आया था, और उस समय हम सब लोगों को पता था कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। हमें ये भी पता था कि वैक्सीन आने में करीब 1-1.5 साल लगेगा, बट एट दैट टाइम ओनली देयर वर सेवरल क्वेश्चंस कि वैक्सीन आएगी तो किसको लगेगी। तो पहला क्वेश्चन ये था कि 130 करोड़ जनता को वैक्सीन कैसे लगेगी। सो एक ये फ्यूचर प्रॉब्लम है। फ्यूचर प्रॉब्लम्स सिनेरियो वर्कशॉप में सॉल्व होती हैं, तो उसमें सिनेरियो बिल्डअप किया जाता है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो था कि वैक्सीन 1 साल बाद आएगी तो 130 करोड़ जनता को कैसे लगेगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर वैक्सीन आई और उसकी फुल डोजेज नहीं आई, आधी पॉपुलेशन के लिए आई, तो किसको लगेगी और किसको नहीं लगेगी। सो दिस वाज अ सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो ये था, उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉफिट मेकिंग काम है, एक से ज्यादा कंपनी आएगी और वैक्सीन बनाएगी। सो व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन कंपनीज व्हिच कम्स विद द वैक्सीन इन इंडिया, तो किसको कौन सी लगेगी। सो दिस इज अ सिनेरियो 3। So what happens is in scenario workshop, you anticipate problems, you derive questions out of it. These questions are called scenario building. Then you choose participants. They are stakeholders. They can be civil, general public, they can be government agencies, they can be business houses. You discuss the problem with them, then you generate results and plans and action plans. और ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया कि ये जो आपका अभी वैक्सीन का खेल है, इसका सॉल्यूशन भी पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही हुआ है, और इसमें जो गाइडलाइंस बनी है वो भी पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही बनती है। दिस इज हाउ सिनेरियो वर्कशॉप्स वर्क। जो मैंने लास्ट की 3 चीजें बताई थी, दे ऑल कंप्राइज एंड दे फॉर्म अ सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? वो प्रोजेक्ट्स जो एक लार्जर पॉपुलेशन को और लार्जर समय के लिए अफेक्ट करते हैं। उन सवालों के जवाब सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट से ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेंगू का एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज डेंगू वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम अगर बनाना है तो कितना एरिया स्टडी करना पड़ेगा। डेंगू जो है वो पूरा वेस्टर्न, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड एनसीआर, ये एरिया इन्वॉल्व है। अब इसे वेक्टर कंट्रोल करना है तो वेदर केमिकल मेथड्स होंगे, बायोलॉजिकल मेथड्स होंगे, ये कैसे जवाब मिलेगा इसके? उन सब एरियाज से उनकी प्रॉब्लम्स जाननी होंगी, उनका डेटा कलेक्ट करना होगा। अ सिंगल इंस्टीट्यूट कैन नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस। तो क्या करते हैं? फर्स्ट दे फॉर्मुलेट अ साइंटिफिक क्वेश्चन, देन दे फॉर्मुलेट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। तो सारे इंस्टीट्यूट्स जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी एक्सपर्ट्स की टीम बनती है। वो टीम फिर प्रोटोकॉल्स, डेटा फॉर्म्स और एजुकेशन मटेरियल्स बनाते हैं। फिर वो सिटीजन को रिक्रूट करते हैं। ये एक मैसिव काम होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ सिटीजन। न्यूज़पेपर एड्स, टेलीविजन एड्स से रिक्रूट होते हैं लोग। फिर उनकी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होती है। देन दीज पीपल गो इनटू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज एंड देन दे ब्रिंग डेटा कलेक्ट करते हैं उन फॉर्म्स पे, जो फॉर्म्स पहले से अप्रूव हैं। Then this data is accepted, edited and shared with the participants and the public. Before analysis, this data has to be shared. Then this data is analyzed by experts and the results are communicated in the scientific journals with the government agencies for policy making. और ये भी देखा जाता है कि ये जो डेटा बना है उससे जो रिजल्ट आया उससे क्या डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। So all these are citizen science projects. They are part of scientific communication. This is how the science is disseminated into the public. So what are the aims of scientific communication? Public awareness. तो ये बड़ी वेग टर्म है। What is public awareness? आप इसमें A awareness से attitude कर दीजिए, public attitude. So it is the public which has a positive attitude towards science. इसका मैं एग्जाम्पल सोच रहा था तो मुझे याद आया कि
लास्ट मंथ जब मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो आई वाज पोस्टेड इन RCH 2, तो मैं पीछे से राउंड लेने के लिए आ रहा था, तो हमारे हेल्थ वर्कर्स जो सफाई कर्मचारी हैं वो 3 लोग बैठे हुए थे वहां पे, एंड दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ। और उनमें से एक ने कहा कि यार ये पीपी पहन के अंदर जाना ना मुश्किल लगता है। तो उसका साथी जो था, आई वाज जस्ट ओवर हियरिंग वहां से जाते हुए, तो उसने कहा कि अरे ये सब बेकार है, ये सब पीपी किट वगैरह ये जो ये लोग कहते हैं, आप 3 पैग लगाओ और अंदर जाओ, सब काम करो, देखो कोई कोरोना वोरोना नहीं होता। So this is about attitude. So this is a negative attitude towards science. So public awareness means public should have a positive attitude about science. Second is public understanding of science. So awareness में तो केवल attitude होता है, understanding में public starts understanding the content of science, its processes and its implications as well as various social factors are concerned. Public awareness और understanding का purpose क्या है? The purpose is to develop a level of scientific literacy. And what is scientific literacy? Scientific literacy is the ideal situation where people are aware of, they are interested, and they are involved in the practice of science. They form opinions, they reform opinions, they are easy to discard old opinions and adapt new opinions, and they seek to understand science. So it is an ideal situation. बट वन शुड थ्राइव। जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन का बेसिक पैरामीटर है वो यही है कि कम्युनिटीज कितनी साइंटिफिकली लिटरेट हुई है। एंड देन ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा है? इट इज टू डेवलप अ साइंटिफिक कल्चर। और जब साइंटिफिक कल्चर क्या होता है? साइंस सोसाइटी वाइड एनवायरमेंट विच अप्रिशिएट साइंस एंड सपोर्ट साइंस। व्हेन अ कम्युनिटी हैज अ साइंटिफिक कल्चर, द पीपल इन दोज कम्युनिटीज हैव अ बेटर चांस ऑफ better awareness and understanding of science, and that leads to a better scientific literate society. So कोई भी चीज सोसाइटी पे तब लागू होती है जब वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करे। सो व्हाट आर द पर्सनल रिस्पॉन्सिव फ्रॉम साइंस कम्युनिकेशन? सपोज मैं आपको ये लेक्चर ले रहा हूं, तो ये साइंस कम्युनिकेशन है बिटवीन पीयर्स, बट ये तभी अफेक्ट करेगी टू अ लार्जर ग्रुप इफ इंडिविजुअल्स आर बेनिफिटेड। सो अगर आप लोग अवेयर होते हो फॉर दिस टॉपिक, इफ यू ऑल्सो एंजॉय दिस टॉपिक, अगर आपको ये लगता है कि साइंस जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज एज गुड एज आर्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? इफ यू गो बैक एंड अगेन रीड अबाउट इट, इफ यू आर एबल टू फॉर्म ओपिनियंस और रीफॉर्म ओपिनियंस और एबल टू डिस्कार्ड ओल्ड ओपिनियन, जैसे आपके भी हो सकता है कुछ कंसेप्ट इसके बाद चेंज हुए। एंड ओवरऑल इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग साइंस, its content, processes and social factors. So एक वॉवल एनालॉजी है AEIOU, ये एक रिसेंट आर्टिकल में आया है और इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। सो दीज आर द पर्सनल रिस्पॉन्सेज। अगर पर्सनल रिस्पॉन्स साइंस कम्युनिकेशन जनरेट कर सकता है तो वो एम्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन भी अचीव कर सकता है, विच आर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड साइंटिफिक लिटरेसी। सो आई कम ऑन टू दिस डायग्राम। तो कोई भी फिलॉसफी जो होती है उसको मॉडलिंग करना होता है। मॉडलिंग मीन्स दैट यू हैव टू डिस्प्ले इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। सो दिस इज द मोस्ट recent and most accepted diagram which shows what science communication is all about. तो इसमें 3 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आप देखेंगे एक्स एंड जेड एक्सिस पे कुछ पहाड़ बने हुए हैं। दिस इज अ माउंटेन रेंज एनालॉजी ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। तो जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो हम सब लोगों का कौन सा पहाड़ है? मेडिकल का है, ये मेडिकल साइंस का पहाड़ है। हम सब लोग इसको चढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की। बट इसके अलावा ना बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ भी हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो इनमें से सपोज ये न्यूक्लियर एनर्जी का है, ये ऑप्टिक्स का है, ये मैकेनिक्स का है, और ये एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस का है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट we are getting literate in only one of the mountain. और हम इस कैसे चढ़ते हैं? We are helped by skills, by media. Media is shown as ladders here. Then activity is special act of climbing, and then dialogue or deliberation among various peers. ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है बिकॉज वी हैव गॉट अ साइंटिफिक कल्चर। बैकग्राउंड में साइंटिफिक कल्चर है, हमारी कम्युनिटी सोसाइटी साइंटिफिक है, तो हम लोग इन पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। बट डज दैट मीन कि हम साइंटिफिकली लिटरेट हैं? साइंटिफिकली लिटरेट होने के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि हमें बाकी पहाड़ों का भी ध्यान रखना है।
अगर हम इन पहाड़ों को भी एड्रेस करते हैं और इन पे भी चढ़ते हैं तो हम एक साइंटिफिक लिटरेसी का लेवल अचीव करते हैं. So this diagram, the beauty of this diagram is that it holds true for an individual and it holds true for a society also. So when it applies to society, in society different people have got different level of literacy in different mountains, but they also have literacy in other mountains. And when there is a level of altitude, then we call that the society is scientifically literate. And how the scientifically literate a society becomes, it goes through the stages of public awareness and public understanding of science. So अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने मेन पहाड़ पे बहुत ऊंचे नहीं पड़े हों, लेकिन उन्होंने बाकी पहाड़ बहुत अच्छे से चढ़े हैं. तो द लेवल ऑफ साइंटिफिकली लिटरेसी दे अचीव इन देयर लाइफ वाज, if you compare yours with them, despite the fact they were not good in their particular study or subject, but they were better scientifically literate than most of us. That is why they were able to do better in their lives. ये उसका जवाब है और ये आप देखेंगे अपनी लाइफ में हमेशा. For example, I personally know so many people who are excellent surgeons and physicians, but they could not do very well in science, in public life also. And the reason is, जैसे communication skills, there are two important communication skills. One is a scientific communication and one is a listening skills. ये दो स्किल साथ में अटैच्ड है हमारी साइंस के. जिनके पास, जो उन पहाड़ों पे नहीं चढ़े, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाए और लोगों ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट नहीं किया. सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू टेल. मैं अपने रेजिडेंट्स को भी बताता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होता है. And we should always be eager to learn about all these things. That is why we are very thankful to Punita ma'am and Aditya sir कि उन्होंने इस तरह के कोर्सेज डिजाइन किए हैं. आज की तारीख में बहुत से लोग कहते हैं कि ये बॉदरिंग है हम लोगों के लिए 0102 कोर्स, बट व्हेन यू गो आउट and what we listen from most of our alumni, it is that the asset that SGPJ has is the 01 and 02 courses, because they give you an extra dimension of learning other than what you are here for. So we come back to the scientific communication toolkit. Their skills, activities, media and dialect, they all help you to ascend literacy mountain. Skills and dialogue we all understand, but what are media and activities? For formal education program, these are lectures, tutorials, courses, conferences and textbooks. And for informal education, these are science museum. अब आपको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो. आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं ना साइंस म्यूजियम्स में, उसका पर्पस यही है. टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स हम सब लोग करते हैं फॉर जनरल पब्लिक. साइंस ग्रुप्स एंड क्लब्स, कम्युनिटी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, साइंस शोज एंड थिएटर्स. जैसे एपिलेप्सी में बहुत कॉमन है नुक्कड़ नाटक, बहुत जगहों पे कराया जाता है जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग एपिलेप्सी इन जनरल पब्लिक. एपिलेप्सी डे पे हम लोग ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं. देयर आर ऑलवेज कॉम्पिटिशन्स व्हिच स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग इट. Then science magazines, etc. They are all informal education programs for scientific communication. There are also certain misconceptions about science communication. Misconceptions like science communication produce immediate increase in science literacy, which you all know is not right. It takes time for an individual to become literate, so it takes much more time for communities and societies to become scientifically literate. Second is, science is only a single mountain peak, which is completely false. You are scientifically literate when you achieve a level of scientific literacy by climbing the other mountains also. A person's mountain range profile is dynamic and changes over time. This is actually true. And it has to change over a period of time because of changing times and changing interests. Only lay public benefit from the science communication is false, because for every science communication there are so many stakeholders. सब लोग benefit करते हैं from science communication. For example, today's lecture, I am the most benefited from today's lecture क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पहली बार पढ़ी हैं. Then scientists are at the summit of literacy mountain, lay public at the bottom, which is completely false. Scientists केवल एक पहाड़ के summit पे होते हैं और बाकी सारे पहाड़ों के base पे होते हैं. So scientists are experts in one field and they are lay public in other fields. So everybody among us are experts as well as lay person. So to summarize, science communication is an important part of modern society building.
Science should bring important personal expressions, awareness, excitement, interest, opinion forming, and understanding. Science communication has got multiple stakeholders like scientists, public, media, communicators, government, and non-government agencies. Science communication applies skills, media activities, and dialogue to attain its aim. And ultimately, the aim of science communication is to build about public awareness, understanding, scientific literacy, and develop a scientific culture in a society. So what I require and request you to just remember this diagram as a take-home message, because this diagram I believe that can encourage you to deal with other mountains in your life also. Thank you so much.